जय हिंद दोस्तों। भाई आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं अपने एक ऐसे इलस्ट्रियस सीनियर को फौज से को लेकर आया हूं ऑनलाइन। भाई जो तारुफ के कोई मोहताज नहीं है। इनकी बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रही है। ये 3 मरतबा तो टेडेक्स पे बोल चुके हैं, ये अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, ये एक्सीलेंट सुपर एक्सीलेंट एथलीट है। इन्होंने कई सारे मैराथन में भाग चुके हैं, में भाग लिया है। ये नेवी में सर्विस कर चुके हैं। ही हैज वन सेवरल एक्लेड्स। इनफैक्ट व्हेन ही वाज इन क्लास 5th, एक बार ये 1987 का किस्सा है ये, ठीक है। ये क्लास 5th में ये रंगमंच पे गए, स्टेज पे गए, एंड आई डोंट नो, इट वाज अ डिजास्टर. What happened? We learned from him how it was a disaster. What happened? Did he forget his line? Did he have a stage fear, stage fright? What exactly happened then? But from that boy evolving to the personality that he is today, pandemic इनके टाइम पे he didn't have any much guidance about career counseling, about armed forces, फौज में कैसे आना है. So one day he chanced upon meeting a friend's uncle who was serving in the navy, and he told him कि भाई ये navy, तब इनको कुछ मालूम पड़ा, अच्छा ऐसा भी होता है. And that is how, anyhow, we will talk about the journey from the man himself, Lieutenant Commander Bijay Nair, sir. Sir, Jai Hind, and thank you very much for spending time for us, sir. Thanks, Ali. And it has always been an honor speaking to you, listening to you, seeing you on the, various channels. Uh, it gives immense happiness when you see someone, one of your colleagues, up there with the likes of Arnab and other people. So uh, it's always a proud moment for me as a person whenever I see you there and in various forums. Speaking about the TED, you have been an inspiration for all of us from the TED days because you are a multiple TEDx speaker and a lot of inspiration drawn from you. And हम तो बस वो राह पे चल रहे हैं. All of us are speakers, but yes, you guys are there already at the pinnacle. So you come from a lineage, you come from a family who has been serving the armed forces and the country for many years. So first of all, thank you for that. And बड़ी खुशी है कि I am on your channel. Probably we have been trying this for pretty long. Somehow the timings were not matching here and there. So glad that this is happening. And thanks again, Ali. Wishing you and the channel. Uh, you're doing amazing job getting amazing veterans on the channel. When I say amazing veterans, to the likes of people who were in strategy, people who were responsible for what we are today as the armed forces as a country. Many of the veterans, senior veterans, chiefs have been on your channel. And जैसे बोलते हैं ना, मैं तो एक तिनका हूँ बस. It's a privilege that I am also in that same league of band of brothers. Yeah. Thank you so much, Ali. Sir, your kind words, your graciousness, your magnanimity makes you even greater. आप इतने generous है ना sir. You have always been very very encouraging to all your colleagues, peers, friends, acquaintances. बल्कि आपका जो nature है, जितने लोग जो जानते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर को, वो बोलेंगे सर इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प. इवन स्ट्रेंजर भी आता है ना, सर खड़े हैं बिल्कुल हेल्प करने के लिए. सर का ऐसा नेचर है. सर मैं आपको बताता हूँ एक बात, पता है, इन द पैंडेमिक ओनली वन डे इंस्टाग्राम, लाइक हाउ यू आल्सो डिड नॉट नो इनिशियली इंस्टाग्राम होता क्या है, वैसे यू गॉट अकस्टम टू इट. तो आपने पहली इंस्टाग्राम लाइव ट्राई करी. आप बताएं कितने 200 से ऊपर आपके इलस्ट्रियस इंस्टाग्राम लाइव हो चुके हैं. मैं इंस्पायर वहीं से हुआ एक्चुअली. मैंने आपका और निर्मित ठाकुर जो हमारे ग्रेट, हम हमारे ग्रैंड सीनियर मैं बोलूंगा, बिकॉज ही इज SS-74, फिर SS-75 ने उनसे रगड़ा खाया. हम SS-76 के हैं. तो हमने SS-75 से रगड़ा खाया. रगड़ा खाते वक्त हम सुनते थे निर्मल ठाकुर के सर के बारे में कि ही वाज AUO, एंड देन ये कहानी उनके बारे में है, लेजेंड एंड दिस दैट, पैरा ऑफिसर. तो मैंने आपका वो एक इंस्टाग्राम लाइव देखा था, एंड आई सॉ द केमिस्ट्री, हाउ यू गाइस वर जेलिंग सो वेल. तब तक मेरा एक भी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी यूट्यूब पे कहीं पे भी, एंड मैंने इंस्पिरेशन वहां से ली. In fact, I spoke to Nimit sir last evening, and we were like, really, we've never met, but we hit off like anything. So we have forged की bonding. So, sir, tell me one thing. From this boy of class 5th in 1987, जो स्टेज पे वो डिजास्टर हुआ, वो क्या हुआ था? Because आज की तारीख में कोई यकीन नहीं करेगा कि ऐसा कोई डिजास्टर हुआ भी था शायद आपके साथ. In fact, a wonderful story. If you go back to memories, ना बहुत प्यारा सा किस्सा है. Because I come from a school, very small school. Like I was not that privileged
but no regrets. So our school was founded by a trust, people, a South Indian trust. And हमारे जैसे I am from Mumbai, born and brought up in Mumbai, though I'm a Malayali. And my father got settled here from a suburb in Mumbai. So school was very small, बहुत छोटा सा English medium school था. और those days, when we were growing up, all of us were growing, हमारा जो generation है, not the millennial or the Gen Z, हमारा एक generation था. Now तो we are old. वो generation में अभी के जो बच्चे हैं, who are like stage fear is alien for them. Like if you talk about our kids, like my daughter and all, I have never seen her with a stage fear right from when she was in the nursery or the junior. हमारे जमाने में थर थर कांपते थे. और कुछ ही बच्चे थे जो who were really good, who were वो scholar, हम जिसको बोलते थे ना, scholar lot. They were the people who were everywhere, and we were like backbenchers, average types, जिसको स्टेज पे कभी जाने दिया नहीं फर्स्ट, और अपने भी हिम्मत नहीं हुई थी जाने. So when I was in fifth standard, somehow I said कि नहीं यार, I have to break this chain and try करते हैं करके, एक बार तो स्टेज पे जाना ही है. Let us see. इंग्लिश भी बड़ी कच्ची कच्ची इंग्लिश होती थी, बिकॉज बोलते नहीं थे, सबर्ब्स एंड ऑल, हाउ थिंग्स वर्क. सो फर्स्ट टाइम आई गेव माय नेम, एक कंपटीशन में दिया, बोला कि जाऊंगा करके, डिबेट और समथिंग. एंड एंड द डे केम, पूरी प्रिपेयर करके गए थे. एंड यू हैव टू स्टैंड इन एन ऑडिटोरियम, एंड देयर वर सम 300-400 चिल्ड्रन, स्कूल किड्स जो होते, प्लस द टीचर प्लस पेरेंट्स. ट्रस्ट मी, जब मैं वहां गया फर्स्ट टाइम, व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग ऑन दैट स्टेज, तब तक सब ठीक था. जैसे स्टेज पे जाकर पीछे मुड़ हुआ एंड माइक के पास देखा, व्हेन आई सॉ दिस ह्यूज क्राउड, पैर थर थर कांपने लग गए. एज सच आई स्वेट अ लॉट इवन टुडे, रनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. बट उस दिन तो लाइक पता नहीं क्या, एंड एवरीथिंग वाज फॉरगॉटन. जो स्क्रिप्ट होता है, जो लाइंस होते हैं, माइक होता है. एंड I remember my class teacher was also the PT teacher, physical training teacher, and he was like DS Singh sir बोल के थे, very terror. और उसने बोला भी था कि वही बच्चे जाएंगे जो कॉन्फिडेंट है. एंड आई वाज लाइक, मैं जाऊंगा सर करके ना. व्हेन आई सॉ एवरीबॉडी, एवरीथिंग वाज फॉरगॉटन. और कुछ समझ में, हम पीछे से ही वाज नजिंग कि ना, बोलो कुछ तो बोलो करके ना, विजय नायर कुछ तो बोलो. एंड आई वाज लाइक फ्रोजन, लिटरली फ्रोजन. और फिर वो 2 मिनट का वक्त था, ऐसे ही खड़ा रहा, फिर मुझे भगा दिया गया. और जैसे मैं स्टेज से वहां से उतरा, पीछे बाजू सर खड़े थे वहीं पे. दोज डेज तो लाइक मारना, बच्चों को और स्टूडेंट्स को मारना तो लीगल होता था ना. अभी तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. वहीं पे पीठ पे 2-3 दिए, बोला कि खबरदार दिखना नहीं अगला 6 साल यहाँ पर करके, ऑन द स्टेज, इसके इर्द गिर्द. So that was a funny incident, and that actually broke my confidence to a greater extent कि यार नहीं होगा हमसे, है ना. But things gradually went, years passed on, and when I happened to join the Forge later, I think it was a game changing event in my life, the life changing event. Because Forge में ना की तो कोई अहमियत ही नहीं है. Whether you don't know public speaking, you know public speaking, everyone has to do that. There is no escape from that. And वो जो journey चली from then on to what today I am, like able to stand in front of everyone, thousands and thousands. तो मैंने ना बड़ा प्यारा वही बोलता हूँ कि when that fear of stage or the stage fear, आपने उस जिस दिन उसको कैप्चर कर लिया ना, स्टेज बिकम्स योर प्लेग्राउंड. स्टेज बिकम्स योर प्लेग्राउंड. और फिर वो जो मजा है ना, देन whatever you speak is an art. You know how to keep people bounded to what you are speaking. So touch wood, by the grace of God and the blessings of parents, आज तो वैसे है कि कोई भी स्टेज पे खड़ा कर दो, कोई भी तरीके की ऑडियंस हो, बच्चे हो, मिडिल एज, जेन जी, मिलेनियल, फौजी हो, कॉर्पोरेट्स हो, टॉप मैनेजर्स हो, वी आर ब्लेस्ड कि ठीक है, वी कैन हैंडल देम. So that was the journey, very beautiful journey. Now close to 200 plus talks, and couple of 3 TEDx. So life has been pretty kind, and
gracious, and everything goes to Fauj. I mean, without doubt, me as a personality, what I am today, as an individual, as a person who's able to survive in the society, from where I came in a suburb, from a chawl to what I am today, everything is courtesy Fauj. बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है. हम बोलते हैं ना कि हमने फौज को सर्व किया. इट इज नॉट दैट वे. वी आर जस्ट मिनिस्क्यूल पार्ट. फौज इज वो हु मेड अस. फौज के पास तो चॉइस ही चॉइस है, हमारे पास तो फौज चॉइस था. सो दैट इज द डिफरेंस. वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड. बिल्कुल, बहुत खूब फरमाया आपने. और सर, मोर रिस्पेक्ट फॉर यू सर, एंड मोर पावर टू यू. आई मीन, बाय गॉड, इट इज सो इंस्पिरेशनल, इट इज सो इंस्पिरेशनल. मैं क्या बताऊं आपको. सर ये बताइए, फिर जब आपको तो इल्म था नहीं कि फौज में कैसे आना है, क्या है, तो आपके फ्रेंड के अंकल आपको मिले एक्सीडेंटली, उन्होंने आपको बताया कि नेवी में कैसे ज्वाइन करना है. अगर फर्ज करिए आपके फ्रेंड के अंकल नेवी में नहीं होते, आर्मी में होते, क्या आप फिर नेवी की बजाय आर्मी का सोचते क्या? नहीं, इनफैक्ट ना बहुत प्यारा सा हिस्ट्री है इसके पीछे. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ. हमारे ज़माने में या इवन आज भी मैंने जो देखा है कि देयर इज़ अ बहुत बड़ा अभाव है, बहुत बड़ा अभाव है कि फ़ौज के बारे में नॉलेज, नॉलेज बिल्कुल नहीं है. इवन टुडे, देयर इज़ नथिंग न्यू. हमने जो बस थोड़ा परसेंटेज चेंज हुआ. आज इंटरनेट है, यूट्यूब है, एवरीथिंग, एंड पीपल लाइक अस हु आर ऑन द फोरम. हमारी कोशिश यही जारी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले फ़ौज के बारे में. हम्म. बोथ ऑफ अस आर ऑन दैट मिशन. हम फौज में सर्व कर चुके. तो जब मैं ग्रो अप हो रहा था, हमारे स्कूल तो जैसे मैंने बताया छोटी सी स्कूल थी, और हमारे सबर्ब्स में और इवन एज सच मुंबई में बहुत कम लोग हैं जो फौज जाते ज्वाइन करते. तो यस. जब करियर के बारे में सोचना चालू किया था, सेवेंथ एट्थ, मतलब एक छोटा सा ये कि अच्छा क्या बनूंगा करके, तो फर्स्ट थिंग वाज कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, इंजीनियर, ये पोस्टमैन. मुझे तो पायलट, ये ट्रेन जो होता है ना, मोटरमैन बनने का बड़ा शौक था. बहुत बड़ा शौक था. तो देयर वर नो वन टू गाइड अस. एंड a very interesting thing, many of our listeners won't know about me, that my chacha was a gangster. My chacha was a वाओ, gangster. So आई डिड नॉट नो दिस. सर मैं तो पूरा पढ़ पढ़ा के आपको, मैंने पढ़ने की ये अभी नहीं, एक साल से पहले आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड आई हैव बीन रीडिंग अप अबाउट यू एंड आई हैव बीन अपडेटिंग माय सेल्फ अबाउट यू, कि भाई सर के साथ जब मैं गुफ्तगू में होऊंगा आई शुड बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट सर. तो जो यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर लिखा है यहाँ पे, इट्स द पीएचडी इन लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर, बेसिकली आई वुड से दैट. तो मैं इतना पढ़ के आया था, आई थॉट दिस एस्पेक्ट आई जस्ट डिड नॉट नो. टेल अस मोर अबाउट दिस. दिस वेरी वेरी. yeah, so ये बहुत छुपा हुआ एस्पेक्ट है which I generally don't say, but at the same time I don't have, I don't shy away also from it, because he was very dear to me. जो मेरे चाचा थे, एजुकेटेड पर्सन, वेरी एजुकेटेड. जब बॉम्बे में आए, मुंबई ऑफ 90s, ग्लैमर था, सब कुछ था. So unfortunately he got sucked into that glamour of power, maramari. He was, like a good athlete himself, a bodybuilder, smart, handsome guy, for any woman will fall types, वैसे वाला बंदा था. And unfortunately he happened to divert to those aspect of Mumbai, तो गैंगस्टर बन गए. एंड देन तो मेरा, व्हाई आई एम रिलेटिंग दिस इज कि मेरा जो लाइफ को देखने का जो जरिया था, बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू हिम. और मैं उनका जब शान बान देखता था ना, कि द वे पावर, बिफोर ही कम एवरीथिंग यूज्ड टू बी क्लियर्ड फॉर हिम टू कम. जैसे अभी हमारे चीफ्स वगैरह आते हैं तो पहले एक स्क्वाड आता है, सब क्लियर करता है कि एवरीथिंग इज फाइन. सो ही कैरीड दैट ऑरा दैट टाइम. एंड मैं तो बस छोटा था, सेवेंथ एट, मैं पीछे खड़े होकर देखता था कि भैया ये क्या है करके. So I've seen guns and all those times, 7 8, with all those talwars and things like that. And तभी मुझे ऐसे था ना, साला बनना है ना, यही बनना है करके, ऐसे ये ऑरा में जीना, guns and everything. And yes, touchwood, जैसे बोलते हैं ना कि whatever we हम चाहते हैं वो होता है करके, अगर if you visualize. So I played with guns, but in the forge, गन आई गया हाथ में कहीं ना कहीं. So so
My mother was very very instrumental, because my mother knew कि ना हम अगर हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए तो हम we will get sucked into this, because youngsters, all three of us were boys, our boys, you know, my brothers, siblings, तो इनको, और जो मैं सबब में रहता था, बहुत ज्यादा 99% चांसेस थे you get sucked into all this. But she was that pillar who ensured कि हम वहां पे भटके नहीं करके, यू नो, बहुत मार पड़ी है, बहुत ये करे, जस्ट टू इंश्योर दैट पढ़ाई की ओर रुख मोड़ ले और शरीफ इंसान बन जाए टाइप. एंड दैट इज द टाइम, थैंक्स टू शाहरुख खान, द सीरियल फौजी वाज हैपनिंग, यू नो, and that somehow changed everything for me. That was the game changer. And my first love was always olive. First love was always army, you know, because navy के बारे में इतना जानते नहीं थे. एंड फिर ये था, फिर तो जिद हो गई कि ना फौजी बनना है करके, और वो भी आर्मी में जाना है. बट अ गेम चेंजर फॉर मी वाज अगेन वेयर आई स्टे, सबब. तो देयर इज अ नेवल कॉलोनी, नेवल सिविलियन कॉलोनी, which houses the naval civilians, naval dockyard के. That is very close to where we used to live. हम लोग फेरी फेरी में रहते थे, स्लम्स, वो चॉल टाइप्स में. और हम लोग क्या करते थे ना, संडे को वी यूज टू ट्रेसपास एंड गो इनसाइड द कॉलोनी, क्योंकि वहाँ क्रिकेट ग्राउंड बड़ा प्यारा होता था, यू नो. बॉम्बे आज भी आज तो हक से जाते हैं वो. हम लोग दीवार फांद के, और या तो एक गटर होता था, सूखा गटर जिसको बोलते हैं, वी न्यू वेयर टू गो इन. बीइंग अ सिविलियन हाउसिंग कॉलोनी, इतना सिक्योरिटी नहीं था कंपेयर टू व्हाट, यू नो, द यूनिट्स एंड अदर कैंट्स हैव. सो वी न्यू द गैप होल्स. और क्रिकेट खेलने जाते थे, 10-12 बच्चे होते थे बाहर के. एंड कन्वीनियंटली वो भी सोचते थे कि ये अंदर वाले ही बच्चे हैं करके, सो नोबडी यूज्ड टू बॉदर अस. बट एज टाइम वेंट, किसी को पता चल गया कि बाहर के बच्चे हैं. एंड देन वी वे कॉट, यू नो, कपल ऑफ टाइम्स वी वे कॉट. वी वे लाइंड अप, प्रॉपर लाइनअप होती थी वहां पे. फिर मुर्गा बनते थे, उठक बैठक लाइक एकेडमी. और सिविलियन किड्स है तो अंदर वाले और मजे लेते थे, जो, यू नो, प्रोवोस्ट स्टाफ होता. सो वन सच इंसिडेंट, एक बार एक white gypsy आई when we always made to stand. There was a white gypsy which came, and there was a, you know, Maruti gypsy, naval provost लिखा हुआ. And there stepped out a guy, a lieutenant probably. वो जब बाहर निकला, टिपिकल मूवी जैसे, पहले जूता बाहर आया व्हाइट वाला, फिर व्हाइट सॉक्स एंड व्हाइट पैंट एंड, you know, the white shirt, the golden epaulet, and this guy was pretty damn handsome, you know, like कैप पहना था, रेबैन का गॉगल. And that moment everything changed for me. I was like, I was sucked into aura of this particular person, you know, कि यार ये एक बंदे को मैं देख रहा हूँ जो नेवल ऑफिसर है. फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ नेवल ऑफिसर सो क्लोज. देन आई वाज वंडरिंग कि जो 20,000 की नेवी के फौज होंगे, एवरी डैम गाय वुड बी लाइक दिस. दैट डे ही रिप्रेजेंटेड नेवी टू मी. उस दिन से सब कुछ चेंज हो गया, यू नो. द आर्मी जस्ट वेंट a step back from my life, and it was navy then on. And since I was staying close to the naval camp, everything changed for me. And then the journey started, you know. फिर वो ये चालू हुई, तलब हुई कि ना कैसे जाए नेवी में. दैट इज हाउ व्हेन दैट फ्रेंड्स अंकल, उसने बोला कि माय अंकल है नेवी में है, आई डोंट नो व्हाट रैंक और ही इज, बट हम चल सकते हैं मिलने. एंड एज यू से ना, लक इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एक जो सुपर पावर होता है, वॉट एवर वी कॉल हिम, विच एवर नेम वी गिव हिम, देर इज अ पावर, देर इज एन एनर्जी विच सिनर्जाइजेस योर थॉट, कि चलिए बंदे में ना प्रोबेबली ही वो जोश है कि ना, ही वांट्स टू नो या मोर अबाउट. दैट इज हाउ दैट कनेक्ट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू. व्हेन वी वेंट टू मीट हिम, स्कूल बंक करके गए थे, तो देखा तो एक अच्छा सा, एक थोड़ा एजेड गाय. एंड देन व्हेन ही सॉ, पहले तो बहुत ले ली, गाली वगैरह दी है कि हाउ कैन यू बंक स्कूल एंड ऑल, टिपिकल फौजी. देन व्हेन वी एक्सप्रेस्ड आवर इंटरेस्ट, तब उन्होंने बताना चालू किया. एंड लक हैपेंड, ट्रस्ट मी अली, लक हैपेंड. ही टर्न्ड आउट टू बी एन ऑफिसर, यू नो. तभी हमें पता नहीं था ऑफिसर क्या है, अदर रैंक्स क्या है, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं पता.
मेजर कौन है या सूबेदार मेजर कौन है, इसका डिफरेंस कुछ नहीं पता. And he turned out to be a lieutenant commander. He turned out to be a lieutenant commander, senior guy. And that's the way this happened, you know. And then उन्होंने एनडीए के बारे में बताया, एनडीए एग्जाम्स एंड what you have to do and you know you have to improve yourself. काफी कुछ उन्होंने बताया जो आज हम ज्ञान देते हैं बच्चों को, यंगस्टर्स को. Probably that day he came as a messiah to give this ज्ञान to us, you know. And उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अगर कभी फौज जाऊंगा, I will also help, you know, the generations to come when I am in that position to help them. And वो was a sea changer. तभी मुझे एनडीए के बारे में पता चला and subsequently I gave my NDA exams. I cleared NDA exams. I cleared SSB, you know, 92nd NDA के साथ. I was equivalent 92nd NDA. And then the disaster struck. See, NDA का medicals are tough. Compared to when we compare the SSBs आगे, medical is tough, no doubt, but I always believe that 10 plus 2, plus 2 का जो medicals are comparatively tougher than the our times, you know, after graduation. तो eyes का trust me, even today I don't know what was the problem with my eyes. उन्होंने जब बोला कि 6x6 मैच नहीं हो रहा है, something they discussed and they were ruthless to say ना कि नहीं, you are unfit for the forge. And it was a heartbreaking moment because समझ नहीं आ रहा था ना हुआ क्या है करके, you know, because आपका ड्रीम है, यू आर क्लोजर टू योर ड्रीम. एंड मुझे ये था कि एनडीए ज्वाइन करके मैं नेवी जाऊंगा करके. तभी आईएनए के बारे में पता था कि आईएनए का भी है, बट आई वांटेड टू बी मोर इनटू एनडीए. एंड देन एवरीथिंग केम क्रैशिंग. आई वाज गिवन अ चांस टू अपील टीआर, बट ना हमारे जमाने में देयर वाज नोबडी टू सपोर्ट. माय फादर वाज यू नो एन टेक्नीशियन, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है. तो व्हेन आई टोल्ड कि दिल्ली जाना है अपील के लिए, he said कि बहुत पैसा खर्चा होगा and all, and then I cannot afford, to be very frank. So forget it. Do your BSc and things like that, and graduation अच्छे से करो. I will ensure that you pick up a job in my factory where he works as a technician. Those days legacy होता था, जो काम करते उनके बच्चों को लगा सकते थे type. And thus the journey, the first part ended, the first breakdown happened, and the NDA dream, you know, somehow couldn't materialize. तो ये था पहले दैट ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी, द लव फॉर आर्मी टू नेवी. बट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आज यू नो लाइक आज हम लोग वॉट एवर वी आर टूडे, फॉर अस एवरीथिंग इज सेम, यू नो. हम लोग तो आर्मी नेवी एयरफोर्स हम देखते भी नहीं. ऑल जो हमारे कोर्समेट्स है, दे बिकम्स कोर्समेट इक्विवेलेंट. हमारे ऊपर नीचे वाले जो कोर्स है, दे बिकम अ वेरी गुड जूनियर. ऊपर वाले become a very good senior, you know. That's the beauty of forge. Trust me, Ali, I'm sure you have seen much more forge in terms of being from the family. It's a beautiful thing, you know. It's a beautiful thing, and I'm so lucky that मेरे जनरेशन में, मेरे फैमिली में, आई एम द फर्स्ट वन टू बी इन, एंड द लेगेसी कंटिन्यूज, यू नो. नाउ एवरीवन हैज अ पर्सपेक्टिव दैट अच्छा ये भैया थे फौज में, या यू नो माय चाचा, में मामा, जब आगे के जनरेशन बोलेंगे बोलेंगे कि कोई तो था हमारा फौज में. एंड आई एम ग्लैड कि अभी के यंगस्टर्स, सो मेनी ऑफ यंगस्टर्स आर टेकिंग interest in my family also to join the forces. A lot of them call me to check on that. So that was the journey, that was the transition, to answer your question, you know. Wow, that is so inspiring, sir. That's so inspiring. So were you always a fitness freak? Because abhi bhi even after leaving Forge and being a holding a very high responsible position in the corporate sector, आप फिर भी आप मैराथन दौड़ते हैं. आप you have been a best selling author. You have been awarded several accolades for all that you have achieved in life. Though you always play it down कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मगर हम we all lot of people look up to you. So were you always a fitness freak? Secondly, did you always have a flair for writing, sir? uh yeah, so to answer both the question, so you know like मेरा आज भी एक जिद हमेशा ये रहता है कि द थिंग आई एम वीक इन, जो भी चीज में मैं वीक हूँ, I ensure कि you know I put in lots and lots of effort to make that a better thing for me. So same thing happened when we talk about writing. As I said, I come from a very small school जहाँ English वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देते थे.
इवन द स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग तो बहुत दूर की थी. So when I went to junior college, that is 11th and 12th, school change hua. I went to a school college, junior college. And that college happened to be one of the best because I had a decent marks in 10th and wahan mil gaya. And the surrounding and the environment which I was there was different, totally different, because वहाँ जो बच्चे आते थे, यहाँ वहाँ से सब आते थे बच्चे, एंड इंग्लिश वगैरह कॉन्वेंट इंग्लिश. एंड देन मेनी अ टाइम ऐसे होता था कि हम लोग बात ही नहीं करते थे शर्म से, बिकॉज वी कुडंट मैच देयर इंग्लिश, उनकी राइटिंग, उनकी ऐसे राइटिंग या जो भी है. उस दिन हमने डिसाइड किया था ना, साला कुछ करेंगे ना तो इंग्लिश में ही करेंगे करके ना, इंग्लिश लिटरेचर, जैसे मूवीज में देखते हैं ना. उस दिन से जिद हो गई ना कि ये लैंग्वेज को मास्टर करें. सी नोबडी कैन मास्टर, नो डाउट अबाउट इट, बट बेटर बनेंगे करके. एंड देन आई स्टार्टेड पुटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवी. बहुत सारे इंग्लिश मूवीज देखते थे समझने के लिए कि भैया लोग हंसते क्यों है मूवी देख के ना. क्योंकि आई रिमेम्बर गोइंग टू हीरोज एंड अदर थिंग विद माय फ्रेंड्स, और जब इंग्लिश मूवी चलती थी तभी सभी लोग हंसते थे, क्लैप करते थे व्हेन दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे. और हम जो तीन चार लोग थे, हमें समझ में नहीं आता था कन्वर्सेट क्या हो रहा है करके. एंड टाइम डिले के साथ ना हम भी हंसते थे जस्ट टू इंश्योर दैट ना कि हम भी हैं करके वहां पर, सम डायलॉग्स यूज्ड टू. सो वहां से शुरुआत हुई, watching lots and lots of things, फिर friends देखना and those. And then of course, when you master that, and then I started writing. So when I joined Navy, somehow after engineering, when I got cleared, engineering में भी I started writing articles. जो इंग्लिश ग्रामर वगैरह ठीक नहीं होता था, someone used to correct it for me. But जैसे जैसे नेवी में आया, I started ships में, academy में I gave one article that got published. That gave a confidence. अरे लाइफ में जो एक ड्रीम थी ना कि कभी ना कभी एक आर्टिकल पब्लिश होना है, and that happened in naval academy. Naval academy में one of my articles got published, and that was the boom, which gave कि चलो, style of writing. My style of writing is humor. My style of writing is masti, to see something in life, and that is even today. I observe a lot, and then subsequently when I uh, got appointment, various staff appointment, ship appointment. So I used to ask and take the officer in charge. Other than हमारे, like all of us do lots and lots of appointment. एक अगर हम लोग main होगा तो 10 और responsibilities होती है. So I used to take library wala, OIC library wala, so that I can spend more time on books. Bachelor the, and in a very forbidden place, somewhere posting थी along with the special forces Marcos के साथ. तो वहाँ पढ़ना बहुत होता था. And a lot of articles got published. And then of course when I left Navy, when I finished my commission, then I started writing a lot. And touchwood things happened. सो वो जो ड्रीम थी ना, जो देखा था एक बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, ढंग से लिखना नहीं आता था, 4 सेंटेंस जोड़ना नहीं आता था. एंड व्हेन आई सी बैक टुडे, वो जिद के वजह से टुडे आई एम एन ऑथर ऑफ 2 independent books, 5 anthologies, and my third book is about to hit in another 2-3 months. So yeah, so journey was beautiful. That was the part as an author. I got couple of awards in that journey. 2021, my second book received the best author award national level. So that was the journey part. Then my blogging is there. My website has got a lot of blogs. I love blogging. As far as the physical aspect is concerned, the love for physical fitness, I was always into sports. School days, maybe sports may traditional sports like kabaddi, kho. I was a sprinter, decent sprinter those days. And then, a decent cricketer. Even today, I play cricket. I'm a wicket keeper batsman, even today. Um, and things change. Things change. Distance running was never in my foray. ये academy में जाके when we went to academy, वहाँ देखा तो everything is running on the doubles. And my batchmates were all good sports people. Coincidentally, they were all, many of them were good sportsmen. And I was only good at cricket and things. So cross country used to be the thing. एंड मैं पहला एक दो क्रॉस कंट्री, आई वाज इन द लास्ट एनक्लोजर. बहुत पनिशमेंट मिली थी, बहुत. एंड पीपल यूज्ड टू से दैट स्क्वाड्रन का नाम खराब कर दिया, ये वो. आई एंड दैट टिपिकल एकेडमी में कैसे.
लास्ट एनक्लोजर वालों को अलग से देखते थे, मेंटल टॉर्चर लिटरली. मेंटल टॉर्चर. तब मैंने डिसाइड किया ना, ये मेरी वीकनेस है, दिस इज माय वीकनेस एंड आई विल समहाउ मास्टर दिस. एंड देन आई यूज्ड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन दैट. एक्स्ट्रा पीटी करते थे ये. टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टर्म इन एकेडमी, लास्ट वाले एनक्लोजर से आई केम क्लोज टू सेकंड एनक्लोजर, which was a very huge improvement in terms of everything. And subsequently, when I left Navy, there was a health scare. I'm a hypothyroid patient, because hypothyroid is a condition where uh, thyroid gland doesn't generate the proper T3 T4 TSH wala jo funda hai. Because of that, I have to take extra pills every day to sustain that. The negative aspect is you become a deficiency is lifelong. If you don't take care of that, your weight increases, and there are so many other associated things, like बाल का ये होना, weight. So primarily for me, weight was an issue. मुझे weight attack कर गया, and I in 2010, 9, 10, I was 107 kgs, 107. Oh. And then came the quest again कि ना फौजी हम लोग, all of us are, हम लोग वही सेम खून से बंधे हुए, अपने को पता होता है when life starts going down, तो okay, you have to buck up your boots and बोलते हैं ना, to pull up your socks and this thing. Same thing happened. Then I started endurance again restarting that journey from 1 kilometer walk, 2 kilometer run, ऐसे करके 10 kilometers, 15 kilometers. तभी when I used to look back those days, I used to think यार ये सब तो एकेडमी में किए हैं. बट फर्क यही था कि ना समवन यूज्ड टू फोर्स अस इन एकेडमी, स्क्वाड्रन के नाम पे या पनिशमेंट के नाम पे. यू नेवर यूज्ड टू एंजॉय, यू यूज्ड टू ओनली finish those cross country या run just to ensure that your squadron is up, and personally you are not punished for anything, but it was forced. Right. It was forced. वो दिल से नहीं आता था कहीं तो. And then Right. civil में आने के बाद when the distances started increasing, one day I did a half marathon, 21 kilometers, then subsequently 42 kilometers, and then my weight got reduced to close to 30 kgs down हो गया, 30 80 81 82 के आसपास. And then that marathons became ultra marathons. So ultra marathons is anything above 42 kilometers distance. So in 2019, I did my first international event per se. This was a 90-kilometer run in South Africa, regarded as one of the toughest runs of the world, one of the few toughest runs of the world, which is a dream for every distance runner. Comrades जिसको बोलते हैं, Comrades Marathon. So I completed. You have to complete in 12 hours. At various stage cutoffs are there. So I completed that in 11 hours 48 minutes. And the best thing was, time was fine. I could clear before 12 minutes cutoff. I could have cleared much more earlier. But there was one incident which was captured by entire international media. And when I woke up next day in Durban, South Africa, there was like it became viral, and there were messages all across on my phone from India, from abroad, from many. So what happened was, when I was about to last ke 2 kilometer bache the, close to 88 kilometers or something, there was this one athlete who has fell down, South African, Okay. and then कोई देख ही नहीं रहा था, सब भाग रहे थे उसको छोड़ के कि. एंड देन आई वाज लाइक यार, हाउ कैन समवन बी सो रूथलेस, ये बंदा भी फिनिश लाइन के 2 किलोमीटर दूर है, समवन हैज टू हेल्प हिम. बट क्या होता है ना, इंटरनेशनल रेसेस एंड ऑल, you are spending money, you are going to different country, your only aim is to run and finish that race, because बहुत लोग कर नहीं पाते. 90 kilometer is a huge distance. So in that bargain सब लोग निकल जाते हैं. And I was, when I saw him, मैं बोला यार, where is the sportsmanship spirit, of the people? Forget race होगा नहीं होगा, we are not Olympics थोड़ी ना दौड़ रहे हैं ना. ठीक है, it's a milestone for you individually, but not at the bargain of some athlete very close to finish line, and he's just nobody looking at him. So I went to him. मैंने उसको उठाया पहले. He was not in a position. तो मैंने उसको जब कंधे पे डाला मेरे, he was like 6 feet tall, a very huge built South African athlete. So when I
I put one of his arm on my this thing, and I started uh, dragging him along with me. That 2 kilometer probably I could have done in 13, 14 minutes, and I would have finished in 11 hours, 20 minutes or something. But I had to take this guy. So when I dragged him for 200 meters, he was crying, like कि साला कोई तो help कर रहा है करके. And that was caught by all the international media. And then few people more came. दो तीन और लोग आए help करने. So together, all of us dragged him. Because there's a rule in comrades, you cannot pick him up. उसका पैर नीचे ही होना चाहिए as per the rule. So we dragged him, and then that ensured कि lot of time went. हर एक 100 मीटर के लिए 2-2, 4-4 मिनट जाता था. But unfortunately, at some point of time, this guy totally gave up. मतलब he conked off. फिर medics वगैरह आए, so medics took care, and then we had to continue our race. So आज भी दुख होता है कि that guy didn't continue, गिर गया बेचारा. So I lost 20 minutes there, 20-25 minutes. But वो जो spirit of sportsmanship जो हमें फौज में सिखाया ना कि we cannot leave anyone behind, that I'm glad that came subconsciously. That came subconsciously. यार मुझे किसी को help करना है, मेरा ही फौजी भाई types है करके, I have to pick him up and take him. And that was caught by all the international media, and next day it became an Indian helping a South African, and it was huge. And the best part in all this was later, a month later, that person connected to me on Instagram saying that, I'm so and so, you had helped me, mate, when I was in dire need, and thank you. And probably that is what your country teaches you. That is what is the difference between Indians and other. And that was a huge compliment, huge compliment. He was not saying about me as a person, but as a country which instill values in you. And then I told him I'm from the armed forces, and probably that values are much more instilled in us in the forge rather than anywhere. So this was a beautiful Wow. journey. And as we speak today, I am attempting this year again the same race, because you have to attempt two races, one up and one down. So I finished up. This year again is down. That is on 11th June. So yeah, I'm in best of the training. And tonight I would be running a 60 kilometers in Lonavala. So Oh, as we tonight. yeah, tonight as we Tonight. speak, 2 o'clock I leave Wow. for Lavasa rather, and we have a Right. night run today as a training run, part of that. So yes, I'm fitness has I'm been sure a you do journey. very well, sir. You'll do very well in that race as well, and our prayers are with you. सर आपने वो रेस भला ही फिजिकली रेस के मुताबिक नहीं जीती हो, बट जीत के भी हारने वाले या हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं. And you won so many hearts around internationally, globally. I mean, that made you the true hero, in fact. And उससे एक तरीके से देश का भी नाम रोशन हुआ, sir. We are so proud of you. So glad, and thank you very much. It was really inspiring listening to you. दिल कर रहा था कि मैं आपको सुनते ही जाओ. एंड आपकी आज 60 किलोमीटर का आपको दौड़ना है लोनावला में, आप सिलवा से जा रहे हैं. So we wish you all the best. I will not take much of your time. I know you're busy also, and आपने despite your busy schedule, you took out time for us, sir. Thank you very much, sir. Jai Hind, sir. All the best, sir. Thanks, Ali, and thank you so much, brother. Thank you so much. Keep inspiring. Thank you, sir. Jai Hind, sir. I'll just go off air, sir, just a minute.